बहुत सारे फिल्म समारोह ऐसे हैं जो 7वां जागरण फेस्टिवल जो अब मुंबई पहुंच चुका है। अंग्रेजी में बोलूँगा क्योंकि मैं मिड डे अखबार में काम करता हूँ, अंग्रेजी की अखबार है। Thank you very much for coming over. Of course, this is also for the opening film. Thank you very much, Arjun, for making it one of the finest talents we know, purely because I think he represents that generation that is very talented, yes, but also doesn't take himself seriously. I think you had us with the roast, and I hope you continue to do these things more often, because that's where the new India is. I think another place where new India is in festival, and I think we're partnering in that project to evolve a new audience through a film festival like GFF. Just to give you a slight brief on what we intend to do over the next few days, and of course all of you will be here. A few things that I've been personally involved with, so I'll mention those. Of course, Manoj will mention far more other things that the festival is going to do in Bombay in particular. One is a fantastic section that we've come out with, which is the secrets. I was telling Arjun this right before. Like, you know, we've known Vidhu Firul Chopra's works, but we don't know that he made a film that was nominated to the Oscars, and that's going to play here in Countless Faces. We know of Jani Vidhu Yaro. It's a fantastic movie, but we don't know of a film called Bonga that led to Jani Vidhu Yaro, which was Kundan Shah's first film, and one of the rare movies for a diploma film that was a comedy. Back in the day, nobody used to make comedies for diploma films at FDI anyway. We know about Nirja as a fantastic movie, but we don't know that most of us don't know that the first film by Ram Madhwani was this fantastic picture called Let's Talk, which is an experimental film where it's the same story that plays out 4 times during the course of, let's say, about 120 to 90 to 120 minutes. And it's also a debut film of Baman Irani, who became a huge sensation thereafter. So, I mean, that's the secret section. The other thing that I would like to talk about is a lovely book we've come out with, which hopefully will launch during the course of the evening, which is the In Conversation series that me and my colleague Ajay Verma have done with India's finest filmmakers. It's a conversation that leads into their thought process, into how they think, and what leads to those films that we've loved, right from Raju Hirani to Anurag Kashyap to Kabir Khan to Imtiaz Ali. These are people who represent the spectrum, the wide spectrum that Indian cinema has taken, and something that we reflect at Jagran Film Festival as well. The third thing that I'd like to talk about is the tabloid that we've come out with, which is what we consider some of the finest actors. Arjun, you're not there in it, I hope you will be next year. We couldn't get in touch with you in time. And their relationship, the most important relationship, is a tabloid, so of course we talk about relationships, but it's their relationship with cinema. And right from Amitabh Bachchan to Kangana Ranaut to Alia Bhatt to Naseeruddin Shah, of course, who will, by the way, he will be in attendance on the 29th during the course of the festival, because that's another thing that we've done this year is a lovely retrospective of Naseeruddin Shah's works. And we started conversation with him in Delhi. Then it was like a 1-hour conversation. Then we took it further down. You know, we continued talking. It was an actor's masterclass, as it were, in Dehradun. And the third segment of that actor's masterclass will be with him here in Bombay on the 29th. So guys, please do come over. I don't think we've seen talent like Nasir in years, and I hope that of course we'll see new ones. But there's a lot to learn, and Andheri is just the right place for an actor's masterclass anyway. So guys, thank you so much for coming over, and I hope you enjoy the festival and become part of not just the festival, but become part of the movement. Because that's really what we're trying to do. It's the 7th year. 7th is in Dog's life is 1 year. So of course it's going to become bigger and bigger as it grows, and I think it'll be something that the world will look at in a very, very big way. And the team is right here, and congratulations guys, fantastic job, thank you. Lot has been said, Mayank ne bahut kuch aapko bata diya hai, but I would be short because you are not here to listen to me but to watch a movie.
Good. Good. So we come to the point. The festival's job is to create path for the filmmakers. That's the endeavor we are. That's the endeavor of all the festivals. Now, पहला फिल्म जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, it makes a statement and it's very topical. एक बच्ची जो है बेल्जियम से ISIS को ज्वाइन करने चली जाती है और उसकी माँ ये समझना चाहती है कि ऐसा क्या हो गया मेरी परवरिश में कि जो ये बच्ची बेल्जियम से ISIS ज्वाइन करने चली गई and she goes back to the ISIS territory to bring her daughter back. It's a highly celebrated film from a very renowned filmmaker Rashid Bukharib, and it's a film from Algeria. Actually, he's an Algerian filmmaker. This is where we begin our journey with, and we will finish our journey with yet another equally wonderful film called Al Masira. Al Masira was a film in Morocco. It developed into a film. It was a march. It's called the Green March, where all the Moroccans on the King's Call marched into a territory, the Western Sahara, and captured the whole territory without firing a bullet. It was a peaceful, non-violent movement. So we are screening that film on 2nd of October. एक दिन ऐसा दे दो जहाँ आप खुश हो जाओ जो पोजीशन पकड़ी एक्टर सब डायरेक्टर ऐसा कभी नहीं हो ना जहाँ खड़े हो बहुत अच्छे लगे थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट नहीं अर्जुन, आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं आप सेंटर में होते हैं। और अब जो हमारे चीफ गेस्ट हैं अर्जुन कपूर, और हमारे बाकी साथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित होगा और इसके साथ ही अजय ब्रह्मात्मज, मनोज श्रीवास्तव जी और विनोद जी। मुझे लगता है कि इतने सारे दिए जलने के बाद तालियों का मौका बनता है। हम 7वां मुंबई जागरण फिल्म फेस्टिवल ओपन कर चुके हैं एक तरह से, और मैं मयंक जी और अजय जी से ये कहूँगा कि जिस किताब की बात हो रही है क्या उसको लॉन्च किया जा सकता है यहाँ पर, और सप्लीमेंट को प्लीज़ हम बेसब्री से इंतज़ार करें। दिया नहीं चाहिए हम शिफ्ट हो जाए
आप सबको फेस्टिवल में सारी फिल्में देख के जाना चाहिए, बिकॉज आप सब डायरेक्टर बनने वाले बहुत। और जोर से बजा दो ताकि बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी और अजय जी। मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक को तैयार करने में जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। वहीं से बोल सकते हैं, माइक दीजिए प्लीज। सर हमें आप छोड़ के जाना चाहते हैं। सिनेमा में अर्जुन को कैसे छोड़ सकते हैं। ये पुस्तक आई है टॉकीज सिनेमा का सफ़र। पिछले साल हम लोग जागरण फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक कोशिश थी हमारी और मयंक की कि हम लोग हिंदी फिल्मों के जो ऐसे डायरेक्टर काफ़ी मशहूर जो हैं और अलग अलग किस्म की फिल्में बना रहे हैं उनको लेकर के डिफरेंट सेंटर्स में अपने बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली और मुंबई में भी। मुंबई में जो लोग हैं वो उन्होंने देखा होगा, इम्तियाज़ और राजकुमार हिरानी के साथ हमने यहीं पे बातचीत की थी। उन्हीं सारी बातों को जमा किया गया है इसमें। कोशिश हमारी ये रही है कि इस बातचीत से और इस किताब को पढ़ने से वैसे लोग जो फिल्मों में आना चाहते हैं, फिल्मों में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक कुछ प्रेरणा मिले, उनको कुछ सीखने समझने की बातें मिलें। इसमें वैसी बातें नहीं है जो अमूमन हम लोग मीडिया में या दूसरी जगह बातचीत किया करते हैं और फिल्म में आने पर इस फिल्म में आपका रोल क्या है और फिर ये फिल्म कैसे मिली और इस तरीके की बातें नहीं है इसमें थोड़ा डिटेल में, थोड़ा गंभीरता के साथ उनके क्राफ्ट के ऊपर, उनकी शैली के ऊपर, वो जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर बातें की गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये पुस्तक जल्दी ही बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाएगी और अमेज़ॉन वगैरह पे भी आ जाएगी। आप लोग इसका हिस्सा बने और अपनी प्रतिक्रिया दें तो हम लोग आगे भी इस तरह के काम कर सकें। धन्यवाद। मयंक आप अपनी बात कहिए प्लीज। इस काफी थैंक यू। यहाँ पे जो ऑडियंस है दो चीज़ के लिए आई है, ओपनिंग फिल्म एंड अर्जुन कपूर। आई थिंक should come up and say a few words. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वापस बोल सकते हो आप सब? नहीं, मजाक कर। सबसे बड़ी कठिनाई होती है अंत में आके बात करने की कि जो भी आप सोच के आते हो कि कहोगे वो सब कहा जा चुका होता है। और एक हमारे जो व्यूअर है वो वैसे ही बहुत उतावली है पिक्चर देखने के लिए, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं जाहिर करना चाहता। किसी ने तो यस कहा था जब सर कह रहे थे कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आई वुड जस्ट लाइक टू say thank you to the Jagran family for having me here for such a prestigious occasion. Being somebody who's grown up watching films, मैं बड़ा हुआ हूँ फिल्में देख के। अलग अलग जगहों से मुझे मौका मिला है देखने का। While I was growing up, I had the luxury and the pleasure of having VHS, LD, DVD, VCD. कहीं ना कहीं उससे बहुत असर पड़ा है मेरे अपब्रिंगिंग में, and my love for cinema that has evolved over a course of time. जो हमारे देश की यूथ है, जो देश की आवाम है, उनको ऐसा मौका नहीं मिलता। जैसे सर कह रहे थे कि आजकल कंजम्पशन होती है, कभी फ़ोन पे, कभी घर पे टीवी पे अगर पिक्चर आती है तो, बट इवेंचुअली जो हमारे बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, जिनके अंदर एक आवाज़ है, जो बात करना चाहते हैं, जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड सिनेमा, दे वांट टू लर्न फ्रॉम सिनेमा। हिंदी फिल्म काफ़ी नहीं होती, अंग्रेजी पिक्चरें काफ़ी नहीं होती, दुनिया भर की पिक्चरें हम सबको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। And especially for actors and filmmakers and even technicians for that matter, cinematographers. हमारे छोटे छोटे शहरों से उभर के बहुत सारे ऐसे हस्तियाँ आई हैं जिन्होंने बॉम्बे आके मकाम बनाए हैं। कहीं ना कहीं they've educated themselves on their own by making the effort to find all kinds of films from all kinds of countries. आज 7 साल से जब ये फेस्टिवल चल रहा है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उससे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जहाँ पे आप मान लीजिए भोपाल जैसी जगह पे कोई बडिंग फिल्म मेकर होगा जो देखना चाहता होगा अलग तरह की फिल्में, ना कि सिर्फ बॉलीवुड, ना कि सिर्फ हॉलीवुड जो आपको शायद ऐसे रेगुलर सिनेमा घर में देखने मिलती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा मौका है, उसके लिए ये बहुत बड़ी सीख है।
और जब चर्चा होती है तो और भी सीखने मिलता है। तो अगर मास्टर क्लास होगी या अंत में भी होगी तो इन बातों से सीखने का मौका मिलता है। आई थिंक दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन आवर बडिंग फिल्म मेकर्स कैन गेट। इट इज नॉट करप्टेड बाय द कमर्शियलाइजेशन in many ways. I also agree with what Mayank said. Each festival is welcome. All of them are. They should all be celebrated. It's not about the bigs and the smalls. It's more about the content. As long as the films do their job, as long as the people organizing it make sure we connect with as many number of people out there who want to be involved in a part of cinema, I think they're all doing a fantastic job. So going to so many cities in India, I feel that's a phenomenal achievement and that one that should be spoken about more often. और वहाँ पे हमारी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहूँगा कि आप सब जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जैसे मैं, जो अलग अलग तरह के सिनेमा को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उनको ये बताइए कि ये फेस्टिवल अगले साल आपके शहर में आएगा या इस साल अगर आप मुंबई में हैं तो आके देख सकते हैं। बिकॉज आई फील यू गाइज विल ब्रिंग अबाउट दैट कनेक्ट विद द ऑडियंस, नोइंग कि हाँ हम देखना चाहते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। लाइक रोड टू इस्तांबुल फॉर मी साउंड्स लाइक सच अ रेलेवेंट फिल्म। आज हाल ही में जब पिंक चल रही है वो हिंदुस्तान में बहुत रेलेवेंट है, वैसे रोड टू इस्तांबुल कहीं ना कहीं दुनिया भर में बहुत रेलेवेंट है। ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स डोंट नो वेयर दे हैव गॉन रॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट सिनेमा शोज यू व्हाट रियलिटी इज। We look at cinema for inspiration, but cinema also looks at life for inspiration. And films like Road to Istanbul seem like they can make a difference. So why not have as many people as possible watch them? So yes, thank you for having me, thank you for having this, and I hope it continues for a very very long time. मैं ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाहिर करूँगा, and I hope you guys enjoy the festival and spread the word.